Hello and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. So these are the topics we are going to cover in this video. We'll talk about electric dipole and its dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उस पर मोमेंट कितना जनरेट होता है, विल टॉक अबाउट इट, राइट. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और कैसे हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. टॉर्क क्या होता है? एक रोटेटिंग फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगती है जब उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. देन विल टॉक अबाउट कि क्या टॉर्क जनरेट होगी जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं. ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज जस्ट फॉर CBSE स्टूडेंट्स बिकॉज ISC स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, बट इन सम बुक्स ऑफ CBSE दिस टॉपिक इज गिवन, सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस. Okay, let's talk about our first topic. It is electric dipole and its moment. Okay, so what is an electric dipole? एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है और उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है. सो ऐसी तीन प्रॉपर्टीज़ के साथ किसी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज, अगर एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज भी Q है, बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट है. ओके, सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला एक मोमेंट होता है जो कि प्रोडक्ट होता है ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, so when I say distance between them, it means Q into L. So you can write P is equals to Q into L. Okay, in some of the books this formula is mentioned as P is equals to 2QL, but do not get confused because यहाँ पे हमने 2L को L माना है, right? यहाँ पे L is equals to 2L है. Now we have studied about the electric field due to a point charge and we have evaluated it also in our previous videos. Now we'll talk about the electric field around an electric dipole. So under this topic we are going to evaluate the electric field at point P, which is located somewhere on the axial line. Okay, what is axial line? Axial line is the line which is joining these two charges. Okay, and if we extend that line, this point P exists on that. Distance between the point P and the center of the dipole is x as mentioned. Now अगर यहाँ पे हम complete length L ले लेते तो हमें इंडिविजुअल चार्जेस से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालने के लिए L/2 करना पड़ता इन दोनों पोर्शंस के लिए. सो दैट्स वाई हमने लेंथ को 2L माना था. ओके, सो हाफ ऑफ द लेंथ बिकम्स L and another half is also L. Alright, I hope you get the point now. So let's say ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है. तो फर्स्ट चार्ज जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज इवन. एज यू नो दैट इट इज पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. नाउ नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज शो करेगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑल्सो. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि E1 और E2 के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स कितने हैं. सो यू नो कि एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए वी हैव अ फॉर्मूला दैट E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon the distance. Okay, so let it be R1 right now, distance square. This is the formula of E1 and E2. Now we need to know the distance R1 and R2. See, सेंटर से हमारा डिस्टेंस क्या है? X है, और सेंटर से हमारा Q का डिस्टेंस जो पॉजिटिव Q है उसका डिस्टेंस क्या है? L है. तो अगर हम X में से L को रिमूव कर दें, it becomes the distance of R1. सिमिलरली सेंटर से ये भी L डिस्टेंस अवे है तो X प्लस L करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने R2 को. सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ R1 and R2 नाउ एंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ चार्जेस. Alright, so we can represent E1 and E2 in the form of X minus L and X plus L like this. Now you can evaluate it because we know that E is the vector quantity and we need to consider the direction.
तो हमारा जो E नेट हो जाएगा इस पॉइंट पे EP पे, वो उनका वेक्टर सम हो जाएगा। KE हमारा कॉमन आ जाएगा, Q भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, 1/x minus L whole square. Alright, you can expand it and solve it, cancelling out all the positive negative terms. Now we are left with KEQ, and inside the bracket it is 4XL divided by x square minus L square and its whole square. Now you can write it as net electric field at point P becomes KEQ 4XL divided by x square minus L square whole square. Right, so you now by rearranging we can say the net electric field in terms of dipole moment becomes 1/4 pi epsilon naught 2 px upon x square minus L square and its whole square. So one of the forms of this electric field will be this. And also, if x is very greater than L, then we can ignore L square. So net electric field in this term will become 1/4 pi epsilon naught 2p upon x cube after solving this. Okay. So this is the electric field at point P and at any axial point. So now have a look on the equatorial point of the electric dipole. Equatorial point क्या होता है कि जो एक लाइन इन डाइपोल को बीच में से डिवाइड कर रही हो, उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट P एग्जिस्ट करता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं. सो यू नो कि एक पॉजिटिव चार्ज से अगर हम इस लाइन ऑफ एक्सिस को देखेंगे पॉइंट P की तरफ, तो हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन को ज्वाइन करते हुए ही ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रही होगी. ओके, सो लेट इट बी E1. सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज के अगर हम प्रेजेंस में देखेंगे तो पॉइंट P पे पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्ट कर रही होगी. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम बिकॉज दोनों पे ही चार्जेस कितने हैं, Q और Q हैं. सो डेट्स वाई इस पॉइंट P पे पड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे. ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर. सो लेट्स से अगर ये एंगल हमारा थीटा होता है, ओके, और हम यहाँ से कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचते हैं तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा. सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स. So now by the rules of vector we can evaluate the resultant electric field due to this E1 and E2. So first of all we'll talk about their individual values. E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू यहाँ पे लेट्स से ये R1 है, लेट्स से ये R2 है. एज यू कैन सी कि इनका बेस हमारा सेम है और प्लस ये एक परपेंडिकुलर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस है. तो R1 जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड R2 का होगा. दैट मीन्स R1 इज इक्वल्स टू R2 एंड E1 बिकम्स 1/4 pi epsilon naught Q upon R1 square and E2 square. As you can see R1 और R2 तो बराबर ही हैं, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि R1 और R2 एक ही हैं, तो we can write it as R. और इस दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो कोई और डिफरेंस नहीं है. ओके, तो अगर R ही सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट E1 और E2 आपस में बराबर हैं and we can write it as combined form KEQ upon R square. Alright. Now in the terms of vector we know very well कि हम वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं. एक उन दोनों वेक्टर्स के वर्टिकल डायरेक्शंस, ओके, और एक उनके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. When we talk about vertical axis we have two forms here. As you can see that it becomes E1 sin theta and it becomes E2 sin theta. Okay, so E1 sin theta and E2 sin theta, they are acting opposite to each other, and as we know that E1 और E2 का magnitude same है,
तो वर्टिकल एक्सिस पे होने वाले E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. दैट मीन्स इट बिकम्स 0. Alright, so this was about the vertical axis. Now we'll talk about the horizontal axis. As you can see that horizontal component of E1 is directing towards this point and E2 is also directing in the same direction. So we can write it as E1 cos theta and you can also write it as E2 cos theta. And as you know that E1 and E2 बराबर हैं तो हम इसको E cos theta और E cos theta ही term कर सकते हैं. So horizontal axis में we can write that E horizontal becomes E cos theta plus E cos theta, or you can say 2E cos theta. Now according to the trigonometric functions we know that cos theta का फॉर्मूला क्या होता है, और इस ट्राइंगल को अगर फोकस करें तो हाफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पे हम cos theta लगा सकते हैं. So you can write cos theta as base upon hypotenuse and base becomes L and hypotenuse is R. Okay, so you can write it as L upon R. Also R की कैलकुलेशन because R is an imaginary term. Okay, तो R को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो R की कैलकुलेशन क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इज हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, इट बिकम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. सो R स्क्वायर बिकम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स and becomes x square plus L square, and if we take root we can consider R as this. Okay, so हमारा cos theta क्या आ जाएगा, cos theta finally results in L upon root of x square plus L square. Right, now you can utilize this thing here and you can write instead of cos theta you can write it as L upon root x square plus L square. Putting the formula of E from above, we can write it like this. Now solving it further, we can replace the value of R and we can combine the numerator as 2QL as you can see, and below R square becomes square of this root and becomes x square plus L square multiply by the root of x square plus L square, and you can combine them together. So the final formula we have is 1 upon 4 pi epsilon naught P upon x square plus L square whole to the power 1 upon 2 plus 1 becomes 3 by 2. So this is the formula of net electric field at point P, which is due to both of the charges. Now again, if x becomes very greater than L, we can ignore L square. So we have EP is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon x cube. It is in the same form of that of your axial one, but यहाँ पे difference बस ये है कि यहाँ पे P के साथ ऊपर 2 नहीं है. So we can also say that E axial is twice of E equatorial. Right, so next topic is electric dipole in a uniform electric field. एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होती हैं. ओके, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होती हैं, ऐसे रीजन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. ओके, नाउ अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है. सो लेट्स से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. अब यहाँ पे पड़ने वाली फोर्सेस क्या है, एज यू कैन सी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, Q. नेगेटिव चार्ज पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, Q. नाउ बाय द डेफिनेशन वी नो अगर कोई चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर पड़ने वाली फोर्स क्या होती है, इट बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो दैट. ओके, तो हम उसी बेसिस पे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे पड़ने वाली कोई फोर्स होगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा QE, एंड अगर नेगेटिव चार्ज पे भी वही मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्ट करेगी. ओके, नाउ अब ये डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का. सो एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट होती है पॉजिटिव प्लेट से. ओके,
और एलिमिनेट हो जाती है नेगेटिव प्लेट पे जाके। सो पॉजिटिव चार्ज को एक पुश मिल रहा होगा टुवर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन, और एक नेगेटिव चार्ज को पुश मिल रहा होगा टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। ओके, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं दोनों एंड्स पे, और दोनों एंड्स पे जब इक्वल फोर्सेस लगती हैं तो ये किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एज यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस कि जब कपल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता बट एक रोटेशनल मोशन होता है, एंड इसकी वजह से ही ये डायपोल कुछ इस ढंग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाली फोर्स कैसी है? एक टर्निंग फोर्स है। ओके, तो जब एक टर्निंग फोर्स लगती है तो उसको हम टर्म दे देते हैं टॉर्क का। ओके, सो टॉर्क इज व्हाट? इज अ टर्निंग फोर्स। यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि आपने जूनियर क्लासेस में देखा था। मोमेंट क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इन द टर्म्स ऑफ कपल ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हो जाता है। टॉर्क को टॉ से रिप्रेजेंट करा जाता है। इट इज द सिंबल ऑफ टॉर्क। So you can write it as tau is equals to force. Force कितना है? हमने जैसे बताया it is QE. Okay, और perpendicular distance कितना है? Perpendicular distance is, see, perpendicular distance निकालने के लिए we need to know the line of actions. Okay, और अगर हम देखते हैं तो perpendicular distance, as you can see in the diagram, perpendicular distance is this. Okay, so यहाँ से यहाँ तक का perpendicular distance कितना है? So कैसे निकालें? वी नो दैट डायपोल की लेंथ को हम 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनका बीच में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा दिस साइड इज परपेंडिकुलर। ओके, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होती है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन होती है साइन थीटा के। सो वी कैन से साइन थीटा इज p अपॉन 2l, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज p becomes 2l sine theta, right? So this perpendicular distance p becomes 2l sine theta. Now the torque on this electric dipole becomes QE into 2l sine theta. You can also rearrange it in the form of 2QL again by considering these three, and you can write E sine theta as it is. Okay, you know very well 2QL is nothing but the dipole moment. You can represent it as P, and you can write PE sine theta as tau. Okay, so this is the formula of torque on the electric dipole. Now again, this is PE sine theta. As per the vector, you know sine theta जब हम लगाते हैं it becomes the cross product. कौन सा हो जाता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। सो विद दिस हेल्प वी कैन अंडरस्टैंड कि हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। सो यू कैन से दैट टॉ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. Alright, so that's how you can represent it in the vector form. So this is the vector form of torque. Now we have discussed about the forces an electric dipole can experience within a uniform electric field. There are few special cases which we need to study. So if we place an electric dipole within a uniform electric field, how does it behave? So let's say if it is making some kind of angle with the electric field, so what are the forces it will experience? It will experience the force on this negative particle like this, and this positive particle like this. Now they are forming a couple which will rotate this dipole. Now we'll see the motion of the dipole in this situation. So when the force will act on it, the dipole will experience the force and turn about like this. And because of the forces on the dipole, it will do a to and fro motion like this. And while doing oscillation,
there comes a point of equilibrium when it stops its oscillations and remain in the stable equilibrium. In this state, the forces on the dipole will be like this. Okay, the equal amount of forces will be acting on the same axis and it will no more be able to turn around this dipole. Okay, so this situation is known as stable equilibrium. To describe this stable equilibrium, we can say that it is when the electric dipole moment is parallel with the electric field lines. So as you can see that P, the electric dipole moment, is pointing towards right, and also the electric field are pointing towards the right. So in this situation, the angle between the electric dipole moment and electric field lines will be 0 degree. Or we can say that electric dipole moment is parallel with electric field lines. Now this is stable equilibrium. One more possibility is when electric dipole is anti-parallel with the electric field lines. In this situation, the direction of the electric dipole moment is opposite to that of the electric field, as you can see. In this situation also, the electric dipole will not rotate because यहाँ पे जो forces लग रही हैं वो right से left की तरफ लग रही हैं on the positive charge, and the negative charge is experience a force towards left. तो ये दोनों forces still एक दूसरे को cancel out कर देंगी और ये equilibrium में होगा. But this type of equilibrium is known as unstable equilibrium. Now why I called it unstable? Because यहाँ पे जो forces इन दोनों charges पे लग रही हैं वो हल्के से ट्विस्ट पे भी इसको मूव कर देंगी. जस्ट लाइक अगर इसके ऊपर एक हल्का सा भी फोर्स लगेगा तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा और ये फाइनली जाके अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में रेस्ट करेगा लाइक दिस. तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इन दिस वी कैन से द एंगल इज 180 degree. As you can see that electric dipole moment is pointing against the direction of electric field lines. तो ये हमारा situation होती है unstable equilibrium की. Now we have another case of non-uniform electric field. अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट नहीं है तो उस रीजन को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं. ऑलराइट, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक डाइपोल इसके बीच में रखा जाता है तो ये कैसे बिहेव करेगा. ओके, तो उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम. तो एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप ज़्यादा है, तो यानी ये लोअर इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, यानी एक ही जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने की पॉसिबिलिटी है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हायर इंटेंसिटी है. ओके, सो एज यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है. ओके, यानी कि फोर्सेस जो इस पोर्शन में पड़ने वाली होंगी वो लेस होंगी और फोर्सेस जो इस पोर्शन में पड़ने वाली होंगी किसी भी चार्ज पे वो ज़्यादा होंगी. ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि अगर डाइपोल हमारा इस ढंग से रखा हुआ है, देयर आर टू सिचुएशंस अगेन, जैसे हमने अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि दो सिचुएशन थी, एक तो पैरेलल की और एक एंटी पैरेलल की. पैरेलल इज व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एंटी पैरेलल इज व्हेन इट इज अपोजिट टू इट्स. राइट नाउ इट इज एंटी पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो यहाँ पे जो फोर्स पड़ने वाली है वो लेफ्ट से राइट की तरफ पड़ने वाली है और राइट से लेफ्ट की तरफ पड़ने वाली है. ओके, सो इन दिस सिचुएशन जब दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रही हैं, तो हमारे जो डाइपोल है वो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रोटेशनल मोशन इट विल परफॉर्म अ ट्रांजिशन मोशन लाइक दिस. Okay, so in the case of anti-parallel we can say that it will perform a linear motion and no rotation motion. Linear motion क्यों आया? Because right hand side हम जानते हैं कि जो भी forces पड़ेंगी वो greater होंगी magnitude में और left hand side जो भी forces पड़ेंगी वो lesser होंगी magnitude में. तो नेगेटिव चार्ज पे पड़ने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द
forces experienced by the positive particle. तो यहाँ पे ये फोर्स जो हमारे नेगेटिव चार्ज पे लग रही है इस समय, वो इसको ओवरकम कर जाएगी, एंड फाइनली द रिजल्टेंट फोर्स विल डायरेक्ट द इलेक्ट्रिक डाइपोल टू मूव इन दिस डायरेक्शन. Now the second situation is when this positive particle is in the forward position and the electric dipole moment is making an angle of 0 degree, or you can say it is parallel with the electric field lines. So in the case of parallel, we can see that now the forces experienced by the positive particle is greater and the negative particle is smaller. So now this electric dipole will tend to move in the forward direction like this. So that's all we had to learn in this video. If you found it useful, then please hit the like button, share it with your friends, and subscribe my channel. See you in the next video.